Namaskar and good evening. Thank you for coming today. This is my first conclave I am conducting. तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा आप। एक्सपेक्टेशन हमारे डिज़ाइंस और हमारी डिलीवरी में रखिएगा, बट हमारे इस कंडक्शन में नहीं। So I thought that after 38 years of experience and 34 years of practice, I should share my insight by some of insights to you regarding how to think about a factory building, how you can save money, how can you achieve maximum profit. So that is the topic of today's conclave, main topic. I will share one more presentation after this presentation, after 2-3 presentations. So my main aim, and I think your aim is similar, to maximize your profit. So I will be talking on this, but before that, though all of you knows me, but still I would like to introduce me in brief. I am a founder of Rajiv Associates. I started this company in 1990 after passing from IIT Roorkee. I did architecture, my education from IIT Roorkee in 1986. That's been 38 years now. And I'm a member of few of the organizations like PSD, Chamber of Commerce, SOCM, and won a few awards also, like Best Industrial Architecture Award. And people say that we are one of the top industrial architects in North India. Though I don't consider myself that one, but people come to me with that image. This is about my team, Rajiv Associates. Rajiv Associates was started in 1990, that is 34 years. And with your trust, guidance and support, we managed to deliver more than 1,000 projects in last 34 years, designed and delivered successfully. Jokingly, few of my clients say Rajiv Associates that Rajiv Associates is a factory of factories. Out of 1,000 projects, 800 are factory projects. So we are known in the market as industrial architects, specialized in factory design and the management of factory construction. We handle the project from concept to completion. From खाली लैंड से जब तक आपकी प्रोडक्शन शुरू नहीं होती, तब तक हम साथ में होते हैं, और जब एक बार एक प्रोजेक्ट खत्म कर दिया, तो वो जिंदगी भर का साथ फिर आगे हमेशा के लिए बना रहता है. I have 60 strong and awesome team members who support me day and night. वो मेरे लिए जिहादी की तरह काम करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए. And we have around 6,000 square feet office space at 2 places. One head office is in Rajouri Garden and second office is in Gurgaon. My main achievement, I would say, is that I enjoy the trust of more than 95% of my clients. They give me repeat orders and referrals also. Thank you very much. So that is my main strength. यहाँ पे भी बहुत सारे क्लाइंट ऐसे बैठे हैं मेरे, जिनके साथ मैं 2 प्रोजेक्ट, 4 प्रोजेक्ट, 6 प्रोजेक्ट कर चुका हूँ और अभी भी कर रहा हूँ. I think till last month, Rajiv Associates was not having any marketing and sales division. In last 34 years, कभी हमारा सेल्स और मार्केटिंग डिवीजन रहा ही नहीं. हमें काम करने से फुर्सत नहीं मिली और हमारे क्लाइंट्स को हमारे पास नए प्रोजेक्ट भेजने से फुर्सत नहीं मिली, तो हम उसी पे लगे रहे. Now I am thinking of starting my marketing division, and now our aim is to do much bigger project and
in much challenging projects. Some of the association in which Rajiv Associate and Rajiv Gupta is member, and membership like PhD Chamber of Commerce, MSME, Indian Green Building Council. We are doing almost all our factories as a sustainable green building. In Fire and Security Association of India, ASSOCHAM, Their Housing Association of India. Some of the awards which we have won, people have shown their trust and love to us. We have won Best Industrial Architects of North India, Best in Construction Efficiency, and few of our projects have won awards as a Best Industrial Project from PhD Chamber of Commerce. These are some of our international clients, multinational companies for which we have done work. Harley Davidson के लिए फैक्ट्री बनाई है बाबर, Bosch, Multivac, Bosch, Wendler और German companies, Sangtech in Taiwan के हैं. I am very happy that Joint Managing Director and the Director of Senco Saban GRG Tooling is here to share with us today. I am very thankful to them because to work with a Japanese company is not easy. And I thank them personally to accept my invitation for this conclave. And to design this building, I went to Japan 2 times to study their buildings, and then I was able to deliver them the quality they wanted, the design they wanted. Another Japanese company, Fuji Terminal, located in Nimrana, Autoliv is one of the Fortune 500 companies in the world. They are the biggest manufacturers of airbags and seat belts in the world. For them, we did a project in Chechnya. Arbel Ajud is an Indo-Spanish joint venture. Cohen is an Italian company for which in Pazuka. In Delphi, you all know. These are few of the top Indian clients for which we have done projects like Hindware. All projects of Hindware in North India we are doing. Microtech. For Microtech we did around 150 crore project in Patti. Havers in Nimrana. Nippon, who makes Hero systems and central locking systems for the auto industry. Sonacom Star, Sai Glass, MG Polo Glass, UKB, Ratna Sagar, Tony, Victoria, Calco के भी chairman, Mr. Vijay Gupta is here with us today, and he is one of the top of my well-wisher. इनके सर्कल में कोई भी प्रोजेक्ट होता है और भी कोई आर्किटेक्ट कर रहा है तो वो छीन के मेरे को देते हैं वो कि नहीं ये आपने करना है तो मेरा उनके साथ इतना प्यार है. JIP Plastic, Sandrock Enterprises, this project we are doing as a turnkey project, design and build. उनके भी CEO Mr. Kathuria is sitting here. For them, we are doing a turnkey project, totally including construction. So, KRN is a big project of around 20 acres, more than 100 crores. It is under construction in Nimrana at the moment. Fanzu Toys, it's again a special project for me. It is the first project I have started in Yamuna Expressway area. And chairman Fanzu Toys Mr. N.K. Gupta is sitting here, and he is recommending me before completion of his building to many of his associates and colleagues and other industries in that area. I think this will be the biggest, one of the biggest toy factory, at least in North India, maybe in the whole India. A completely
complete 3 lakh square feet area will be constructed for a toy factory. Afflotus International, concurrent they make electrical panels. The CEO, Mr. Bharat Goyal, and the chairman, Mr. D.P. Goyal, is also sitting here. And they have supplied electrical panels to many of other clients also. Advance and Mall के chairman, Mr. Sanjeev Kumar भी यहाँ बैठे हैं. And जब भी मैं कोई इनकी बिल्डिंग किसी नेक्स्ट क्लाइंट को दिखाने जाता हूँ तो जितना प्यार मोहब्बत ये वहाँ दिखाते हैं उन क्लाइंट के सामने, वो प्रोजेक्ट मेरे पास अपने आप आ जाता है. तो दैट काइंड ऑफ रिलेशन आई शेयर विद हिम. Galileo Graphics is one of the top automobile accessories manufacturer in India. For them we did 2 projects. And Satvik Energy, KLM 60 acre में in Gujarat we are doing their project, and 1 project in Chandigarh we completed in Ambala. कुछ गड़बड़ है? Oh, I think it's my mistake. This is our journey. We started in 1990. Our work area for the many years was only Delhi and Haryana. But after 2000, we spread our wings, and now we are working in at least 15 or 16 states of India. इसकी थोड़ी सेटिंग सेट करो, थोड़ा नीचे लाओ. हो सकता है? नहीं हो सकता, कोई बात नहीं. दिस इज अवर जर्नी दैट वी we started in 1990 with just 2 or 3 employees with just 5 projects. In 2000 we reached to 200 projects with 30 team members. 2010 around 600 projects with 40 members, and now we have crossed 1000 projects, and our team size is 16, and now we are aiming for the 100. Now ये तो introduction हो गया मोटा मोटा. Now I come back to the today's topic, main topic, and it is a very after 38 of years experience, I want to share some of my insight. How we can maximize profit in manufacturing, and how you can build new factory every 2 to 5 years, and you appoint Rajiv Associate for that, so that आपको भी प्रॉफिट ज़्यादा मिले और मेरा भी प्रॉफिट साथ साथ चलता रहे आपके पीछे पीछे. So I would like to ask you a question. जैसे इंटरेक्टिव बनाते हैं, मुझे आंसर दीजिएगा. What is the purpose of making a factory? If anybody can, कोई भी कुछ बताना चाहे, रेस करो अपने हैं. मतलब आप इतनी फैक्ट्रियाँ लगाते क्यों हो? कोई शेयर करना चाहेगा? What is the purpose of the factory? हाँ जी भरत जी. एग्री, एम्प्लॉयमेंट एग्री, बाकी तो आप लोगों के लिए कर रहे हो, अपने लिए क्या कर रहे हो? प्रॉफिट. आई थिंक दैट इज द राइट वर्ड. बेसिकली फैक्ट्री बनाने से ना बहुत सोशल काम अपने आप हो जाते हैं. एम्प्लॉयमेंट, अब रेवेन्यू, टैक्स टू द गवर्नमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, addition to the GDP. But for you, your aim is to earn profit. Next question. How can we maximize the profit? Can anybody give me an idea, your insight? How you can maximize your profit? So बहुत आइडिया है आपके पास. आपने एक
एंटरप्रेन्योर आपने अपना एक साम्राज्य बना रखा है। किसी ने 5 फैक्ट्री का, किसी ने 10 फैक्ट्री का, किसी के पास 1000 लोग हैं, किसी के पास 5000 लोग हैं। मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन। हाँ, आप यस सर, स्टार्ट प्रोडक्शन विद इन टाइम। उसे क्या करोगे आप? ठीक है, बेसिकली मैक्सिमम प्रोडक्शन काजी सुविधा जी। हाँ, एक एनीबडी कैन तो माइक पे पहुंच जाइए जहाँ भी मुझे बोलने वाले हैं ना, तो यस, थैंक यू। To have maximum production, only by doing maximum production you can achieve maximum profit. उसके बिना नहीं कर सकते। Now how to achieve maximum production? अब maximum production कैसे लोगे आप? अब ये कैसे ले सकते हो कि आपको क्या क्या वो इंसाइट्स हैं, क्या क्या वो रीजंस हैं जिससे आप मैक्सिमम प्रोडक्शन आप कर सकते हो? Any by increasing the sales per square feet. Increasing the sales per square feet, right? Absolutely right. Agree. Any other answer? आप रोज करते हो अपने फैक्ट्रीज में, हर महीने कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं आप कि टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन। By having smooth flow of goods from one section to the next section. Yes, basically streamlining manufacturing processes. Yes, but I think by installing maximum machine is the right, because one thing which is doing production is your machines, manufacturing machines. If you can place maximum machines, only then you can have maximum production, and if you have maximum production, only then you can have maximum profit. Now I come to my part as an architect. How the most important question will be after this, how to install maximum machines? कैसे आप ज़्यादा machines अपनी फैक्ट्री के अंदर आप लगा सकते हैं? Yes, right. ये क्या कहते हैं? माइक खोलो जरा। Any other suggestion? Optimize layout. Agreed. Totally right. Any other reason in which you can install maximum machines? All of your suggestions are right. Maximum by providing maximum space for the machines. If you have the maximum space, so you can put maximum machine that. So again, see now how to have maximum space. The factory operations have two major categories. The most important is manufacturing or production, and second one is all the supporting activities for the manufacturing. Like you require storage spaces, you require utilities, you require amenities for the workers, you require office, you require canteen, and many other things. So first thing is production, which is the main aim, and second are the supporting activities, which are supporting the manufacturing. But you need both. Both are equally important. You can say the top importance is production, but production cannot be done without having those things. So I think we can say you want around 70%, 80%
manufacturing space for the actual manufacturing, and 20%, 25%, 30% for supporting activities. Now I come to the which area in a building is the most suitable for heavy machines and manufacturing out of the total area. I think everybody will agree to me that ground floor is the most important for installing heavy machines, for manufacturing. But this was the old concept. But it is still valid for 60% of the products. But for 40% of the products, ground floor is not very important for manufacturing. For the lighter products like garments, for the electronics products, for any other which is not very heavy, or which have some logistics problem or technical issue, which have machines, foundations of the machines. Those are okay for the ground floor. But all other activities, or all other type of factories can be, the machines can be installed on the first floor, or the second floor, or the third floor, etc. And I feel that no supporting activity should be there on the ground floor, because it will reduce your machine capacity or number of machines. All supporting activities should be either be shifted to the basement or on the upper floors or on the open if it can be kept in the open, or on the terrace. Terrace is also a floor. We can keep many utilities, many things on the terrace. That is also a usable space in the factory building. So, are we using optimized space, maximum space in the factory building? Or basically there are many myths in public that basement is costly, or basement is not vastu friendly, or it will take it should not be constructed. But if you don't construct the basement, then where you will keep the storages, raw material, the finished material? Naturally, you will shift it to the ground floor, and immediately, as soon as you shift it to the ground floor, you reduce your manufacturing capacity to 60% or 70% or even half. So I will say to my clients that it is a injustice done to us by ourselves if we use the manufacturing area for any other activity. See, it's a basement. Basement can be used officially for storage, for utilities, for amenities, and the parking. Even the stilt is allowed in many factories. Like in most of the areas, stilt for the parking is allowed, which can be used for the parking. It is also a requirement, and it can be used for transit storage. आपका रॉ मटेरियल आता है, आपका फिनिश मटेरियल जाता है, आप उससे पहले काफ़ी इंस्पेक्शन करते हैं, उसकी नोटिंग करते हैं, और कुछ टाइम वो रखा रहता है, कई बार वो ऑड आवर्स में जाता है, रात के 2 बजे 1 बजे, तो स्टिल्ट इज अ वेरी यूजफुल स्पेस फॉर दैट. And if you don't construct those areas, all the pressure comes to the ground floor. Manufacturing machines. Have you seen these kind of pictures in your factory or
in other factories, where when you made the factory, all the side roads were open and clear. After a few years, you construct a rear setback, आप शेड डाल देते हो, वहाँ एक रॉ मटेरियल स्टोर बना देते हो, फिनिश मटेरियल स्टोर वो बाहर रखा रहता है, साइड सेटबैक कवर हो जाता है, तो इट you encroach the area which meant to be open, you violate the bylaws, you reduces the ventilation and light of your manufacturing area, and the area which was allowed for these kind of activities, that was basement. And do you know that in Haryana 2 basements are allowed? Not a single basement, 2 basements are allowed. I am doing many projects in which I am doing 2 basements. एक बेसमेंट हम पार्किंग के लिए यूज कर लेते हैं, एक बेसमेंट हम स्टोरेज के लिए यूज कर लेते हैं. And in many factories, Rajiv Associates is constructing state also, which is used as parking. Parking is a very huge requirement nowadays. आपके गाड़ियाँ बाहर खड़ी रहती हैं पब्लिक रोड पर, अंदर आप खड़ी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप तो अपनी सड़क भी यूज़ कर लेते हैं अंदर की बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए. एंड see, many finished goods is lying outside the factory building on the road, so it is safety hazard also, and look भी खराब हो जाता है. It's become like a जुगाड़ू kind of factory. So I would like to come back to that. And are we using the full potential of our factory? Our full potential is the space which is allowed by the government as per bylaws, as per norms. See, if in Haryana the FAR allowed is 200% nowadays in HSIDC. In the Department of Development and Planning is it 150%. But more than that, they give you 3 FAR, non-FAR areas, which is over and above that FAR. That means 2 basements, 1 state. You can have more FAR after making a green building. The 9 to 15% FAR can be taken more if you achieve green building. So जितना FAR वो देते हैं उतना या उससे ज़्यादा तो नॉन FAR एरिया भी अवेलेबल है. And I think we how you calculate your cost per piece, जो अभी नीरज जी कह रहे थे, cost per piece of production, it is the total cost, I think, including land, including construction, including machinery, and including working capital, and then you calculate your cost per piece. But cost per piece will come out of the, like, how much production you are doing. If your production is less due to space constraint, then your cost per piece will increase. If you are not utilizing your land properly, that means sometimes what happens, people make only single story factory, and they take 10 acres of land. 10 acres of land has some cost. Then the development of that 10 acres has another cost. But that ground floor, if we build a multi-layer factory of basement, state, ground floor, first floor, so that area can be achieved in, I think, 3 acres out of 10 acres. 3 acres.
That means you have to purchase only 3 acres. You have to develop only 3 acres. And that money which we have spent uh, in 7 acre extra or the development of 7 acre extra, that can be used for purchasing machines or for working capital. I think आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? It's making a lot of sense. तो होता क्या है कि बिकॉज ऑफ अवर से whatever as per our past experience we decide how to go. मेरे बहुत सारे क्लाइंट मेरे को वो चाइना जाते हैं, मेरे को वहाँ की पिक्चर्स भेजते रहते हैं, फैक्ट्री ऐसी बनाना, ऐसे बनाना, ऐसे बनाना. I am amazed to see in China, I think most of the buildings are 6 story high, 7 story high, 8 story high. मैं तो कभी गया नहीं चाइना, लेकिन मेरे क्लाइंट्स मेरे को फोटोज एंड पिक्चर्स भेजते रहते हैं. एंड चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. आई थिंक most of the manufacturing is happening in China of the total world. I think आधी अगर चाइना में होती होगी तो बाकी आधी सारी दुनिया में होती होगी. So they have achieved that manufacturing capacity by increasing the manufacturing space, by giving more machines. So this is the main thing I wanted to convey to you, that before starting the factory, you must analyze how you can use space, and technical solutions हर चीज़ के हैं. Now we are in the era where metro rail is running on like first floor, second floor, ऊपर चलती है. Now we are in that era where helicopters land on the terrace of the building. तो वो अगर मशीन हैवी है या वाइब्रेशन आ जाएगी, एंड दैट रिड्यूसेस योर प्रॉफिट. दैट रिड्यूसेस योर प्रॉफिट. तो one thing is that the larger part was to utilize maximum potential of your land, purchase less land whatever is required, but use that on maximum level, and keep provision for the future. FAR is increasing, I think every 5 years or 10 years. When I started my practice in 1990, I think in Haryana the FAR was 75 or 100. Now it has gone to 200 in 30 years. So कम से कम एक स्टोरी का हम प्रोविज़न भी रख सकते हैं. इट कैन बी ए लाइट वेट बिल्डिंग, इट कैन बी ए लाइट वेट स्ट्रक्चर, एंड यू कैन मेक मल्टी स्टोरी स्टील बिल्डिंग ऑल्सो, यू कैन मेक RCC बिल्डिंग ऑल्सो. सो दैट इज डिफरेंट. इफ यू रिक्वायर हैवी क्रेन और more height for the production, so that particular area, say out of 1 lakh square feet, you require 20,000 or 30,000 for that area. So that can be PV structured with crane, but rest of the area can be multi-storied. You don't require double or triple height on the complete area. In all the manufacturing operations, many operations are for which you require only 12 feet height, 13 feet height, or 14 feet height. So that area can be multi-storied, and you can achieve the full FAR even in addition to the non-FAR areas. So that will reduce your cost of the production in the long run. Now the other method to increase your profit is to save cost and time. One aspect is the design aspect, is the manufacturing process you follow. I think I am not expert in the manufacturing process. A lean manufacturing system, and I think no reverse movement should be there. Yeah, additional unnecessary movement of man and material should be there.
So that kind of, if we adopt that practices, so that the wastage of time of a worker is reduced. And though that can be half an hour more worker every day. If 100 workers are there, they will around 50 hours every day. If you calculate in 1 year, there's I think huge cost. So that process is to be designed in such a way that it should be either straight line or a U shape or a C direction kind of thing, but in a linear way, not unnecessarily movement and reverse movement of the main and material. In the second picture, I wanted to show that sometimes we design the building in our mind and we see that एक goods lift लगा लेंगे हम अपने फैक्ट्री में, एक पैसेंजर लगा देना ऑफिस के लिए, but let's say by designing the position of the lift, we have not worked the process flow of the manufacturing. होता क्या है, suppose आपने बेसमेंट में स्टोरेज कर दिया रॉ मटेरियल का, then you bring the raw material to the ground floor, then your process starts. You start from one end to the other end. If there is a lift, the lift is going to the first floor for another activities. Then from that other end, again the process start towards the front, and then it has to come down or to go up. But to this end, on this end, no lift is there because we have kept only one lift. हमने सोचा था एक लिफ्ट ही बहुत है, एक लिफ्ट ही 15 लाख रुपए की आ जाती है, तो दो नहीं लगाएंगे, एक लगाएंगे. But now all that process is to be reversed. और वो पूरा हॉल वापस आके आपका मटेरियल नीचे आएगा या ऊपर जाएगा. तो जो रिवर्स टाइम है लेबर का, अब आप खुद सोच सकते हैं, अपने भी एनालाइज कर सकते हैं कि हर प्रोसेस में कितने वर्कर्स लगते हैं, कितना टाइम लगता है, और उसको अगर एक साल का कैलकुलेशन कर लें तो आई थिंक इट्स ए ह्यूज अमाउंट. तो डिजाइनिंग लिफ्ट्स, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, लिफ्ट्स, द कन्वेयर बेल्ट्स should be very well thought of, and it should be designed at the initial level only before start of construction. Before placing machine layouts on the paper, we should not construct a building. Any factory building should not be constructed when no machine layout is prepared. Otherwise, the mistakes will be there, and you will end up wasting labor and the time for unnecessary movement. तो इससे भी पैसे बचते हैं और आपकी कॉस्ट कम होती है और टाइम कम होता है. Few other methods to save and cost of time: speed, the fast construction, and the early start of production. Now we are thinking on this direction, how we can make our construction fast. We can go to the steel buildings, we can complete the production area first so that the production start early, and 2 months, the 2 months profit of the production can be enjoyed. फंड्स फ्लो, ये आपकी बिजनेस ओनर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है. द फंड फ्लो शुड बी एडिक्वेट एंड फास्ट सो दैट द कंस्ट्रक्शन कैन बी कंप्लीटली फास्ट. द इंटेंट ऑफ डूइंग द प्रोजेक्ट फास्ट शुड बी देयर, एंड समटाइम्स वी अपॉइंट द सिविल कॉन्ट्रैक्टर फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट we become little bit complacent, and other
appointment of the other contractor takes time. उससे भी काफ़ी डिले होता है, क्योंकि वो फोकस हट जाता है, आ जाता है कि काम तो शुरू हो गया हमारा. तो अर्ली अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल द कॉन्ट्रैक्टर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. Side by side, many samples are required to be approved during the construction, which require your attention and your time and your approval. So, this area is also, I am finding that it takes lot of time and it wastes lot of time. वो काम करने का टाइम आ जाता है और वो चीज़ अभी तक अप्रूव नहीं हुई होती कि हमने इसमें क्या लगाना है या उसका सिलेक्शन नहीं हुआ होता. गुड एंड रिसोर्सफुल कॉन्ट्रैक्टर्स, ये बहुत बड़ा ग्रे एरिया है, बिकॉज व्हेन वी अपॉइंट कॉन्ट्रैक्टर्स वी टेंड टू गो विद द लोएस्ट वन. द लोएस्ट वन मे नॉट बी दैट गुड, दैट फास्ट, दैट रिसोर्सफुल, एंड इट बिकम्स ए हेल ऑफ a job, a headache, running after him because of his little less expertise and less resourcefulness to get the project completed aggressively. So I would like my clients to think on it, because early production will increase your profit, and if your profit is revenue is substantial and you end up paying contractor 2%, 1%, 3% more by appointing good and resourceful contractors, so ultimately that will be a benefit to you. Then extremely good construction site management. It is the most neglected aspect in the construction industry. आप आर्किटेक्ट भी ठीक ठाक रख लेते हो, एट टाइम्स कॉन्ट्रैक्टर्स भी चलो सेलेक्ट कर लेते हो, बट साइट मैनेजमेंट, डे टू डे द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफ द साइट इज नेग्लेक्टेड इन इंडिया एट लीस्ट, इन द इंडियन कंपनीज. दे अपॉइंट वन सिविल इंजीनियर of the lowest caliber of 2, 3, 4, 5 years experience, which is just an eyewash, and we depend on him, the contractor depend on him, the client depend on him for day-to-day solving of the problems, to managing the site activities in a efficient manner and coordinating each and every one in a technically sound manner, in a right way. So this construction site management needs to be looked after. It is my pain point also. So we are thinking of exploring other avenues. I will discuss with you one by one when the new project starts, yours. But it is an important aspect. Then no major change in design or additional requirement. It also delay the project. I think many multinational companies are doing this. They freeze almost all the drawings or most of the drawings before start of construction. किसी मेरे को टाइम बता देना. I may go overboard. So during the construction, when 200, 300, 500 workers are there at site, many drawings are prepared. Even the working drawings, shop drawings are prepared. At that stage, if any change is required, any major change, whether structure change or layout change or change, so that delay the project by more than 15 days to 1 month. For every change, because again it's a whole process of redesigning, then reapproval, then all the services are to be incorporated like structure design, electrical, etc. Then working drawing is to be issued, and then it is to be studied by the site management team and the contractor,
and then the procurement is distributed, and then the actual new change is implemented at site. So this must be resisted. Finalization of machine details and machine layout. Again, I come to that point. What is happening in most of the project, we design the building and we construct the building, and then we start fitting our machines into that. It should be vice versa. We should design a factory on paper with machines and design the building as per that factory layout. If you do like this, then sometimes your cost reduces, because if the 4 lines of the machines are coming and you can reduce the building by 1 feet or 6 inches or 2 feet, even then the 4 machines are coming. So that basically your covered area will reduce, and that area you can use on the higher floors. And similarly, you can shift the columns. हम बहुत सारी फैक्ट्री में एसिमेट्रिकल लाइंस ऑफ कॉलम भी बना रहे हैं बिकॉज ऑफ द मशीन्स. एक स्टैंडर्ड होता है कि पूरे हॉल के अपने 2 हिस्से कर दो या या फिर 3 हिस्से कर दो और कॉलम की लाइन लगा दो, बट दैट मे नॉट बी सुटेड टू योर मशीन्स पे आउट. तो अगर कोई बीच में से कॉलम हटाना पड़ता है या कोई बे छोटी करनी पड़ती है या कोई बे बड़ी करनी पड़ती है, शुड बी डन. It will suit your process. It will increase your manufacturing capacity. More machine can be installed. So, this again is a very important topic. Clarity of all requirements. बीच में ना पूरे प्रोजेक्ट में चलते चलते कुछ नई रिक्वायरमेंट, कुछ नई यूटिलिटीज, कुछ नई मशीन की ड्राइंग, मशीन की फाउंडेशन ड्राइंग आती रहती है, जिससे वो प्रोसेस ना गोइंग ऑन रहता है और वो ड्राइंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता. ड्राइंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तो साइट पे बीच में ये एरिया भी होल्ड कर दो, ये एरिया भी रुक दो, ये एरिया भी छोड़ दो और बाकी पे काम चलता रहता है. तो दैट इज होल्ड अप्स, दैट इज अगेन डिलेइंग द प्रोसेस. So by like optimizing the space by constructing the multi-story buildings in less land, or by adopting all these measures, I think we can increase our profit and productivity, and by using new trends in construction industry, in design, or some innovative ideas, like instead of the conventional structural system, we can use PT slab. In PT slab, the beam sizes reduces a lot, so the height benefit can be taken, and for the particular spans, for particular loads, it is economical also, and it gives a very good look. It gives a very good look because of the low depth of the beam and very less beams. I am doing many factories with the PT beams or the PT slab, and it is giving value to the clients. For the faster construction, we can use steel building, multi-story steel building instead of RCC building, if really you want that fast. But multi-story steel buildings are little costlier than the RCC building. I think ये भी कम लोगों को तो पता होगा. Again, most of the people think that steel buildings are cheaper than the RCC building. Horizontal steel buildings are costlier than the RCC building, but the shed steel sloped steel building is cheaper than the RCC building. We can use synthetic steel on the floors, in the like heavy floors, instead of steel reinforcement that saves around 35% of the steel bar cost. We can use in the roads, and for the faster construction we can use prefabricated structures.
nowadays, though the prefabricated structure increases little cost to the building. थोड़ा हिंदी में रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हम लोग प्रीफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ इस साइट पर कंक्रीटिंग करने की बजाय। उससे काम जल्दी होता है बट थोड़ा सा कॉस्टली होता है। ये सिंथेटिक स्टील आता है, यानी प्लास्टिक स्टील बार्स, काइंड ऑफ रेजिन स्टील बार्स। It should not be used for the structural element, but can be used for industrial flooring, road, उसके लिए ये यूज़ किया जा सकता है। वो उस पार्ट में स्टील का करीब 35% कॉस्ट का पड़ता है। तो ऐसे कई सारे आइडियाज़ हैं। यू कैन यूज चिप प्लास्टर इंस्टेड ऑफ द सीमेंट प्लास्टर, उससे फास्ट काम हो जाता है। तो यू कैन यूज नहीं। और अभी इसके अंदर बहुत बड़ी लिस्ट है, मैंने वो प्रेजेंटेशन थोड़ा छोटी रखने के लिए ऐड नहीं किया है ज़्यादा। Now I come to another topic. ये मैं सारा ही कर देता हूँ, पहले फिर बात करता हूँ मैं। इंटरेस्ट आ रहा है? अब बोर तो नहीं हो रहा है? I am writing the mistakes which is a common mistake which industrialists do while constructing their factory unknowingly. और ये काफ़ी बड़ा नंबर है जो ये मिस्टेक्स अननोइंगली कर जाते हैं, और उससे उनके लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद होते हैं और कुछ महीने का टाइम भी खराब होता है। लाइक सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट साइट। आप किसी के साथ ऐसा हुआ है कि जिसने बेसमेंट नहीं बनाना है और उसका प्लॉट 5 फुट या 6 फुट या 7 फुट नीचे है रोड से? हो जाता है ना कभी कभी कि प्लॉट का लेवल 6 फुट नीचे है और बेसमेंट बनाना नहीं है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन। दैट मीन्स यू विल एंड अप पेइंग एटलीस्ट 20 to 25% मोर ऑन द ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, बिकॉज उतने डीप से फाउंडेशन आएगी, मिट्टी भरी जाएगी, एंड द स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोर ऑन द ग्राउंड फ्लोर रिड्यूसेस। या बेसमेंट बनाना है और हमने ऊंचा प्लॉट ले लिया है, नीचे प्लॉट सस्ते मिलते हैं मार्केट में, तो यू कैन एंजॉय दैट बेनिफिट बाय टेकिंग इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट द बेसमेंट, एंड यू शुड कंस्ट्रक्ट द बेसमेंट। इसमें वास्तु एंगल भी आ जाता है। समटाइम्स इफ यू वांट टू अडॉप्ट वास्तु एंड यू डोंट परचेज द साइट एज पर दैट, then to implement vastu you end up paying more. अच्छा, ऐसा तो आई थिंक बहुत बार होता होगा कि आप अपने लिए फैक्ट्री के लिए प्लॉट खरीदते हो और आपको लगता है कि पहले ना मैं इसकी बाउंड्री बना देता हूँ फटाफट, एक अपने कब्जे में आ जाएगा, सेफ हो जाएगा। होता है ना ऐसा बहुत बारी, बट अगेन इट्स ए कॉमन मिस्टेक, इट शुड नॉट बी डन, because you have not designed the building layout, till now। आपको नहीं पता कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहाँ आने वाला है, आपको नहीं पता कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप कहाँ लगाने वाले हैं, आपको नहीं पता कि एटीपी का टैंक आप कहाँ बनाने वाले हो, अंडरग्राउंड टैंक। आपको नहीं पता, अभी सोचा नहीं है कि आपको कोई क्रेन ओपन एरिया में लगानी है जिसमें आपको ट्रक से लोडिंग अनलोडिंग करनी है आउटसाइड द बिल्डिंग। ये सब चीज़ें आपको बाउंड्री वॉल तोड़ना पड़ेगा, पोर्शन ऑफ द बाउंड्री वॉल, जब आप उसको बनाओगे। इंस्टेड इफ यू डिजाइन द बिल्डिंग लेआउट फर्स्ट एंड देन यू कंस्ट्रक्ट द बाउंड्री वॉल, आपको पता है तब कि गेट कितना बड़ा रखना है, गार्ड रूम मीटर रूम कितना बड़ा रखना है। अंडरग्राउंड टैंक यूजुअली बाउंड्री वॉल के साथ आते हैं, तो वो पहले बन के उसके ऊपर बाउंड्री वॉल बन रही है, यू आर सेविंग द कॉस्ट ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द बाउंड्री वॉल। अगर क्रेन हमने लगानी है आउटसाइड द बिल्डिंग
तो वो बिल्डिंग और बाउंड्री वॉल के बीच में तो लगेगी। तो उसकी फाउंडेशन बाउंड्री वॉल की इज एंटायरली डिफरेंट डिजाइन एंड डिजाइन ऑफ द कॉलम फॉर हैंडलिंग द क्रेन इज एंटायरली डिफरेंट। तो फिर से वो बाउंड्री वॉल तोड़ी जाएगी। तो ऐसी ऐसी बहुत गलतियां हो जाती हैं जिससे काफ़ी पैसा खराब होता है। तो लैंड फिलिंग एक हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जरा अपना प्लॉट ना साफ सुथरा कर देते हैं, ऊबड़ खाबड़ है और 3 फुट डीप है, इसमें लैंड फिल कर देते हैं और बाउंड्री वॉल बना देते हैं। ये जनरली हो जाता है। बट वी हैव टू एक्सकेवेट अवर लैंड फॉर द फाउंडेशन। हमने फाउंडेशन के लिए तो खोदना है, तो मिट्टी पहले भरने का कोई सेंस ही नहीं है। वी एंड अप पेइंग मोर फॉर अर्थ फिलिंग एंड देन एक्स्ट्रा एक्सकेवेशन फॉर द फाउंडेशन। इसमें 20 और 30 और 40 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग जाते हैं। These are the common mistakes which we are doing and spending our money like अपन है ना वो नोट की गड्डियां जमीन में दबाने के लायक काम हो रहा होता है। Flat roof for PVC shed. I think this mistakes also happen many times. जिसने shed बनाना होता है, if you are going for a shed, sometimes you don't design like you don't go into deep. I think as per bylaws, we need some water tanks for firefighting on terrace. We need to put few services on the terrace, some outdoor unit of the AC on terrace. तो हम शेड बना देते हैं पूरा, और कोई फ्लैट सरफेस हमारे पास होता ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं होता। फिर हम शेड के अंदर छोटे छोटे जुगाड़ करके मेजरमेंट डालने लगते हैं टू कीप दैट थिंग, टू फुलफिल द कंप्लायंस। तो सम फ्लैट एरिया मस्ट बी देयर इन ए शेड बिल्डिंग टू फुलफिल दोज रिक्वायरमेंट्स। ये गलती हो जाती है। आई थिंक आप लोगों ने बहुत फैक्ट्रियां बनाई हैं। किस किस ने सोलर का लोड छत पे लिया है इन द शेड? चौधरी सर, ये एक गलती की है आपने। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। यू हैव एंड अप इन दैट प्रोविजन। पीवी कंपनीज लोग उसमें आई थिंक 20 kg 18 kg पर स्क्वायर मीटर, आई थिंक वो पीवी कंपनीज के ओनर भी बैठे हैं यहाँ पर, बट आई एम सेइंग दैट see but we while designing we take human load on the roof for the maintenance purposes around 68 kg or the 70 kg, and solar load is around 18 kg or 20 kg. If we add 70 and 20 become 90, the structure become heavy. बट क्या कभी आपने मेंटेनेंस के आदमी को सोलर पैनल के ऊपर चलते हुए देखा है आज तक? कभी पॉसिबल हुआ है आज तक? कोई चलता है? नहीं चलता ना। तो लेकिन वो 90 का भी होता है कंबाइंड करके, आइदर 70 रह जाता है या फिर 20 रह जाता है। तो वाई टू ऐड दैट 20 kg इन द लोड ऑफ द स्ट्रक्चर? अच्छा जी, ओके, थैंक यू। सो दिस मिस्टेक्स ऑल्सो हैपन एंड दिस कैन बी रिड्यूस। आपकी कॉस्ट काफ़ी बच जाती है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक द लोड ऑफ द सोलर ऑन द रूफ। अगली बारी चौधरी साहब आपके लाखों रुपये बचा देंगे। Then bylaws. See, in India, many departments are there. The building department is there, the fire department is there, the factory department is there, the pollution department is there. अब फैक्ट्री तो एक बननी है, इतने सारे डिपार्टमेंट हैं और उनके कुछ bylaws are contradictory. Like हरियाणा में 30 मीटर हाइट इज अलाउड फॉर ए फैक्ट्री बिल्डिंग,
But fire department says you cannot go above 18 meters to the floor area. ये गलती हो जाती है। HSIDC के हिसाब से या हरियाणा बायलॉज के हिसाब से आपने वो अपने बिल्डिंग प्लान कर दी और नक्शा पास करा दिया और काम शुरू कर दिया। फिर फायर डिपार्टमेंट में गए, उसने रिजेक्ट कर दिया। आप इन बिटवीन हो कहीं पर कितना कंस्ट्रक्शन, व्हाट टू डू? सो नॉलेज ऑफ बायलॉज, कंप्लीट बायलॉज, एंड देन जैसे कोalition गवर्नमेंट बनती है ना, उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है। तो कॉमन मिनिमम applicable bylaws should be prepared of all the departments so that no mistake happens और वो contradiction ना आए कभी भी। बहुत सारी फैक्ट्रीज एक बीच में DPC सर्टिफिकेट लेना होता है जब फाउंडेशन बनती है। अगर वो DPC सर्टिफिकेट नहीं लिया और गवर्नमेंट ने कंपोजिशन पॉलिसी चेंज कर दी और फीस अभी पिछले 2 साल डेढ़ साल पहले 6 गुना फीस कर दी है गवर्नमेंट ने, कंपाउंडिंग फीस। जिसने वो नहीं लिया था उसको एप्लीकेबल है, जिसने लिया था तो वो बच गया। तो दिस नॉलेज इज मस्ट। ये मिस्टेक्स बहुत हो जाती हैं in terms of bylaws by like synchronizing the different bylaws of the different organization, different bodies, and not taking few approvals at the right time. ये तो मैंने डिस्कस कर लिया। मास्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोडक्शन एरिया, टेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्टिंग ना 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए की हो जाती है, but soil testing is an important aspect. Sometimes कुछ नहीं किया, you end up designing your very heavy foundations or unsafe foundations. So it is recommended to get the soil testing done from 2 different agencies, जो मैं भी अभी नहीं कर रहा हूँ वैसे, but मैं सोचता हूँ कि होना चाहिए। So I will start recommending my clients to get it done soil testing from 2 different agencies. That may save many lakhs of rupees of yours by optimizing the foundation design. So ये इसके अलावा there are many I think more than 25 points I have written in my personal diary. By adopting it, you can save crores of rupees and few months of time. तो आर्किटेक्ट की फीस तो ना वैसे भी लग जाएगी आपके लिए। So it's a recap. So my presentation is like almost finished. I'm just recapping that you have to first think of the placing maximum machine in the same land area. That means by constructing maximum construction area, this is allowed. It should be maximum construction area, FAR and non-FAR. Unless otherwise some technical glitch there, some technical requirement is there by which you cannot do it. You should think of constructing basements and stairs and no supporting activity on the ground floor or on the main production area. It may be on the ground floor, maybe on the first floor. So the lighter activities can go for the higher floors. No reverse movement or the unnecessary movement of the manufacturing process should be there. It will save man hours and time, and the number of workers can be reduced in the factory. Faster construction is the key. Faster construction is we always start late. हम स्टार्ट करने में तो हमेशा लेट हो जाते हैं, बट आवर एंड डेट रिमेन्स द सेम. सो ओनली ऑप्शन इज द फास्टर कंस्ट्रक्शन, बट वी शुड थिंक ऑफ स्टार्टिंग अर्ली ऑल्सो. इफ यू स्टार्ट अर्ली, इट विल फिनिश अर्ली. Early start of production. Even if the complete building is not completed,
but the production area can be completed and you can save 2 months, 3 months or 1 month, so that will add to your revenue. And you can, and we should use new brand, innovative ideas for the faster and the cost effective construction. So I think ये पूरा ऊपर चला जाता है, तो I think get ready for your new factory with maximum profit and minimum cost per piece of production. And you can always discuss with me or call me when you are thinking of new factory, even before you purchase the plot. I can give you few guidance, few insights, few bullet points with which your decision will be more beneficial and more like a profit earning. And this is my favorite line, that we should design factory first and then design the building around it, and not the otherwise, that we design the building and then fit the factory.